Hello, everyone. Are we here? Assalamu Walaikum assalam, Hamdan. How are you? I'm good. Rest of the people are still connecting. Okay. I'm going to wait till everybody is going to join. Hamdan, can you hear me properly? Yes, you're audible. What about Mohsin? Yes, I can hear. Great. Okay. Shahab? Yes, ma'am, I can hear you. Is my voice clear? Yes, your voice is clear. Good to go. Isha? Assalamu alaikum. Yes, I can hear you. Walaikum assalam. Wonderful. Arrest Taria ji प्रेम पे हैं. Who's left? Noor Kai. Yes, I can hear you. I can hear you. I'm here. Okay, great. Okay, so we are all here, right? Shahab, please अपना mic on कर लेंगे? जी जरूर. Okay, Momna, I think your video is off. Is it not? It's still connecting. Oh, okay. So we're gonna wait that everybody is going to come and then we're going to start this session. Or should I just introduce all of you? Oh, you are the boss. Do Oh, whatever. yes. My goodness. ये कौन बोला? हमदान है ना? हमदान बोले हो ना? ये ऐसी बातें मिस्टर हमदान ही कर सकते हैं. हाँ. I know that for a fact. Okay, so I think she has entered though. Okay. Just give me a second. मैं उनको एक call करता हूँ. That would be great. Till that time, what I'll do is that I'll start off with the session. By the way, everybody, this is going to be a bilingual one. हालांकि मैं bilingual के अंदर थोड़ा सा हमदान को पता है मेरी limitations. So, but that's fine. Yeah, I'm really fine. So, सबसे पहले तो welcome everybody. I think I'll give a brief introduction. Thank you. Okay, so on a formal note, Assalamu alaikum everyone. As probably you all know, I'm Fatima Gilani. I'm the CEO and President of Read Pakistan. And ye aur baat hai ki Hamdan keeps on writing Senior Vice Chairperson on the website and the PPT. Well, that's another story. So we are all here. For the people who are watching us, I have today a team जो हमारे पीछे खड़ी रही है, हमारे साथ खड़ी रही है, हमें सपोर्ट करती रही है, our cyber team. Even though there's so many colors to our cyber team, because everybody, each one of you, I'm so glad, and each one of our team members belong to a different vesta of life, and this is really amazing how they have all managed with each other and with Read Pakistan as well. And I'm really happy that today all of us are here in person. हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते रहे, but that's another wonderful thing that we're going to make sure that we meet each other very often now. For the people who are watching us, let me give a brief introduction to you so that you know that the people who have joined us today are really special individuals. They are the backbone of Read Pakistan, and they've stood by our side since long. And even आजकल की दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो कुछ चंद महीने भी कोई किसी के साथ खड़ा हो जाए तो हम समझते हैं way to go, because itनी भी हमारे अंदर persistency जो है वो I think it's lacking.
But I'm going to quickly introduce you to a group of wonderful people, our cyber team. Read Pakistan ka wo wala hissa who are the limbs, really the limbs of Read Pakistan. First of all, I'm going to start with Momina. So Momina, I hope you can hear me. Momina Talib is our cyber operator. She's from Islamabad. And the wonderful thing is that she's from the 8th semester of Doctor of Pharmacy. And the wonderful part also is that she has been a reader all her life. This is one unique thing because मुझे personally ऐसा लगता है कि readers हमारे बहुत कम है. That was the point of the initiation of Read Pakistan, and Momina is one of those people who have really made a mark. And you know, she likes a versatile, very versatile taste, because she likes to read from arts, she wants to know from science, she loves literature, she is a humanitarian and also a person who is from humanities. So basically she is the jack of all trades. Her personal mission, which is very personal, but it comes to the genre of mine as well, is basically to learn as much as possible. This is really, really wonderful because she actually believes in the you know, I would rather say zindagi jo hamari itni mukhtasar si hai, the brief lifespan that we have. And she loves helping people out. So this is Momina. You know, she is a piece of art in her own self. Then I'm going to start with, I think I'm going to start with the profile of Mohsin Khalid, but he's also the cyber operator from Lahore. And he is from my genre because he has done his English literature. He's in his final year, actually. He's been working with the local library to promote the reading culture, which is, again, our mission. And he has also been, you know, moving around with a couple of campaigns in the local colleges, emphasizing the importance of reading. So, hi, how are you today? I'm going to move to by the way, I'm going to move to Isha now. Isha is another of our cyber ducks. She's the head of graphic designers. By the way, for people who have, you know, they're just watching us, I must say that these people, even if they have different genres of interest, these people have worked their way out. And I have seen that, I've observed it, and I have personally witnessed it. Even if when I was at the backstage, I was observing it all the time, that they're the people who are making the difference in Read Pakistan. By the way, I would add to Isha's profile a bit. She's doing her BS in generic nursing from Faisalabad Medical University, which is, again, something very, very different from Read and the exhibitions of Read Pakistan, what Read Pakistan exhibits. So she has been also providing volunteer services from last 2 years with Read Pakistan. And she's also worked with a lot of other organizations. She also knows graphic designing, so you can't challenge her on that. She is the head of graphic designing right now, even in Read Pakistan. So yeah, I got to keep a very nice relationship with her. Well, most of us do have an introduction of Noor. Noor Taiba, she is CyberDuck's head of book club, and people who have been seeing the introductions or going through the read talks, they must be seeing her at times as well. Noor is the person, just come and get you, please Noor, help me out, I can't be there, you should be there. So she is one person. She's an amazing anchor. She knows how to you know, really talk to people, and this is my personal view, by the way, that Noor knows how to handle really nicely, and she also has the patience. I remember Noor, aapka jo last session tha, I was also there though, but you know, you were there 3 hours or something, I guess. By the way, she's a law graduate. Yeah, more. Yeah, so she, by the way, everybody, she's a law graduate from Quaid Azam University, and she's been reading with, she's been, you know, reading with, oh yeah, she's been reading with, all right, but she has been with us with Read Pakistan for more than 2 years, less than 3 years, but more than 2 years. So she also became the book club head
of course, because most of you must be knowing that she was so good in exhibiting her expertise that we made her the book club head. And of course, she's the host, as we all know as well. I'll come to Hamdan now, one of my very special creatures, because Muhammad Hamdan Zulfikar is the cyber sultan of Read Pakistan. He is the student of mechanical engineering. And I know he must be सब में से सबसे ज़्यादा यही बोलने वाला है. So he's in the final year. It's very good. But the best thing about Hamdan, which I personally like, is that he's Hafiz Quran and he's a topper, of course. अच्छा, बहुत सारे Hafiz Quran में से मैंने देखा कि toppers होते हैं. I think उनका mind इस तरह से vestas open हो जाते हैं कुरान की वजह से that they actually become a No topper. doubt. No. No नहीं doubt. होता है. No doubt का है. अच्छा फिर ठीक है. Okay. Okay. So he has been working with Read Pakistan since about 9 months, I guess. So that's it. Shahab के ऊपर अब मैं आती हूँ. Shahabuddin, he is the spokesperson. बहुत ख्याल से इनके सामने बोलना पड़ता है क्योंकि ये जाके वो सारी बातें लोगों के सामने कर देंगे. Social Sciences graduate from IM Sciences Peshawar, and Shahab के बारे में कि he's very passionate about obviously the cause of spreading the love of books and reading. That is one of the major reasons why Shahab is with Read Pakistan, because of his zeal and zest. And I really appreciate it personally, because I think this is wonderful. I mean, social cause and returning back to society, not because we're doing it, because it's something which makes you stand out. But why he's the spokesperson? Because he is a very, very nice trainer. He speaks very nicely, and also he's a leader. So it's all inside him in one package. So now we have, oh my God, look at this, Mr. Hamdan. You're like on the screen all over this place, huh? So how are you, everyone? I think a बहुत लंबा सा introduction हो गया. Everybody is tired of listening to me. They want to listen to you. So how are you, everyone? All well. Alhamdulillah, we are fine. And after such an Great. amazing introduction, getting final wouldn't would be surprised. Oh, thank you. I'm really glad that you all could make it here together. I personally wanted to have this, and Hamdan probably knows about it, that ye wali jo session hai, it was well awaited, at least by me. I'm very happy that you guys are here. It's wonderful to have you all here. So we should start with the formal session now. I think we should start with first of all, 2 questions put up करूंगी खुद ही अपनी जो comfort लगता है उसके अंदर. You can start off with Urdu or start off with English or whatever. But I think one I want from you is your story with Read Pakistan, which is actually the main topic that we have. Or you can go to the next question, which is your love for books. Which one do you want to choose? I think go for the first one first. Let's have it from all of you, one by one. Let's start with Hamdan. अपनी story से शुरू कर दो. तुमने सबसे ज़्यादा बोलना है. 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगी मैं तुम्हें, बल्कि 1 मिनट कर लो इसको. मुझे लगा था मैं यहाँ पे सबसे छोटा हूँ, तो लास्ट बारी मेरी. 1 मिनट. नहीं, बाकियों को मैं ज़्यादा सुनना चाहती हूँ, तो मैं जल्दी से मैं कहूँगी चलो हमदान. आपके बाद मैं सबसे छोटा हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे लगा शायद स्टेटमेंट चेंज हो गई है. बिल्कुल. रीड पाकिस्तान के साथ मेरा अभी कम ताल्लुक बना है. यस, 9th मंथ हुआ है. स्टार्ट किया था मैंने एज एन LR. तो बीइंग LR इज नॉट दैट टफ, बट साइबर सुल्तान तो यानी कि अच्छा लगता है. व्हेन समवन कॉल यू सुल्तान साहब, तो अच्छा लगता है. बल्कि हमारी इस पे कई बार डिस्कशन हो चुकी है कि सर फारूक कई बार चाहते हैं कि हम इस नाम को चेंज कर दें, लेकिन वो मेरे एम्फोसिस पे ना सुल्तान, तो वो हम रहने देते हैं इसको. जैसे आपका CEO से चेंज किया है, तो वो मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं. नहीं, मैं CEO हूँ. आपका चेंज किया है ना अपने वाइस प्रेसिडेंट से, तो मेरा भी चाह रहे हैं कि हम आपका थोड़ा इसीलिए चेंज किया. देखो अभी भी तुमने गलत बोला. सीनियर वाइस चेयरपर्सन को तुमने पता नहीं क्या बोला है मुझे. So ये सारे गलत बोलते हैं. प्रेसिडेंट एंड CEO की तो भी आहिस्ता आहिस्ता होगा स्टार्ट. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. रीड पाकिस्तान के बारे में बताओ. हाउ डू यू फील अबाउट दैट, हमदान?
रीड पाकिस्तान का जो भी पर्पस है, पर ये है कि रीड पाकिस्तान ने मुझे रीडर जरूर बना दिया है, ठीक है। मैं नहीं था ये हमारी At least- अचीवमेंट है कि तुम्हारी अचीवमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया रीडिंग, कंसिस्टेंट नहीं हूं, लेकिन हो जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर इनके साथ कुछ टाइम और रहा तो, क्योंकि लग रहा है कि काफी लंबा सफर जाने वाला है। बस इंशाल्लाह। साइबर सुल्तान बनना, लेकिन टफ जॉब है, ठीक है। इसमें 9 to 5 वाला सीन भी नहीं है, किसी टाइम भी कॉल आती है और आपको वो विद इन सेकंड्स काम करना पड़ता है, ठीक है। और सर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इस चीज में। और सबसे बड़ा टास्क ये है कि इन लोगों से, सारे जितने लोग हैं ना, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि दे आर जीनियस अपनी फील्ड में, ये लोग सारे माहिर हैं, और इनके साथ जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो काफी टफ हो जाता है मेरे लिए डील करना। लेकिन यह है कि ये लोग अपनी टीम में, अपने काम में बहुत माहिर हैं, तो काफी सारी जो मेरी क्वेरीज हैं वो खुद ये रिजॉल्व कर देते हैं। इनफैक्ट नूर है यहाँ पे, मुझे बुक क्लब की कभी कोई टेंशन नहीं हुई, ठीक है। तो बस नूर को मैसेज करना है और काम हो गया, ठीक है। जबरदस्त। इसी तरह मोमिना तालिब है, वन बाय वन में सब पे होंगे। मोमिना तालिब इस्लामाबाद की अगर कहा जाए, शी हैड गॉट ऑल द मूव्स, ठीक है। इस्लामाबाद की जब भी बात आती है तो बिल्कुल हर चैप्टर के साथ कोऑर्डिनेशन, टीम मैनेजमेंट, जस्ट पहले मुझे खुद करना पड़ता था, अब ये सारी मैंने जिम्मेदारी मोमिना पे डाल दी है। तो मैं जस्ट इनको मैसेज करता हूँ और जो मेरा सारा काम है वो हो जाता है। और हाँ, मोहसिन महा चालाकी से। मोमना, क्या करें, पता चल रहा है तुम्हें? मोमिना ये लड़ाई वाला है, लेकिन हमारा अपना है अंदर, ठीक है। तो प्लीज, तो बट सब किसी तो तारीफ के मोहताज ही नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि खूबसूरत भी है वो शख्स, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा अजीज थे। तो बट सब उनमें से हैं एक मोसिर खालिद भट्ट, जो कि चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। खुदा का नाम सोचे। ईशा, ईशा को कम लोग जानते हैं रीड पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इनका जो काम है एज अ बैकबोन है, ग्राफिक्स सारी ईशा हैंडल कर रही हैं। ईशा को हमने बड़ी मुश्किल से रोका हुआ रीड पाकिस्तान के अंदर, नहीं तो ये आपकी पता नहीं कहाँ चली गई होती। तो यही है सारा। और शहाबुद्दीन साहब तो, इनका क्या काम है, ठीक है, हमें कम लिफ्ट करवाते हैं, लेकिन यह कि जब इनकी जरूरत पड़ती है ये हमेशा जगह पे होते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी बोलें। जी मैम, ओवर टू यू। ओके, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ठीक हो गया हमदान, बिल्कुल नहीं, आई वाज लिसनिंग टू इट, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा इट वाज बिट ऑफ अ हिच। तो अच्छा, तो हमदान, आई एम गोना कम बैक टू दिस। एक तो पहली बात ये हमदान, मैंने कहा था पोइट्री तुमने कम बोलनी है, लेकिन वो जहाँ पे थोड़ा सा एक, बाय द वे, विद एवरीबडी इन द टीम प्रोबेबली एवरीवन नोज, लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे हमदान के पास अल्फाज जो है वो कम हो जाएंगे, वहां पे उससे आगे पोइट्री शुरू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी हमारे साथ। अब जो पोइट्री सुननी होगी ना, हम फिर विल कम बैक टू यू। मोहसिन, सबसे पहले चलें, अब हमदान ने तो जो है वो हमें अपनी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो पोइट्री के साथ भी शुरू हो गए, इसका मतलब है कि वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। मोहसिन, टेल अस योर स्टोरी विद रीड पाकिस्तान। सबसे पहले बताओ क्या सोचा था कि रीड पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन करना है? मुश्किल। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने दिसंबर 2019 की रीडर कॉन्फ्रेंस अटेंड की, बट तब तक मैं रीड पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। देन आफ्टरवर्ड्स, आई थिंक जनवरी में या फरवरी में, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इनवाइटेड मी कि ये फोरम है रीड पाकिस्तान का, यहाँ रीडिंग को प्रमोट किया जाता है। मैंने कहा यार ये तो मैं तलाश कर रहा था इसी चीज़ को, तो लेट मी ज्वाइन किया मैंने। फिर वेरी आफ्टर दैट, आई थिंक आफ्टर 1 week or 2 weeks, यहाँ गुजरांवाला में फिजिकल मीटिंग हुई रीडर्स की, इन ऑर्डर टू मेक न्यू प्लान्स कि नेक्स्ट हमारी एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, टीम्स कैसे वर्किंग होगी, और जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं उनके आपस में इंट्रोडक्शन हो जाए। इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग कि हम फिजिकल, तब ये पेंडेमिक का नहीं हुआ था वो, देन आफ्टर फरवरी से मार्च में जाके कुछ हुआ, अराउंड अबाउट मिडल ऑफ मार्च, जब पेंडेमिक का सब कुछ सीन हुआ। लेकिन उससे पहले हमारी फिजिकल मीटिंग हो रही थी, और इवन के मार्च में भी हमारी मीटिंग हमने प्लान कर चुके थे, फिजिकल मीटिंग गुजरांवाला टीम के साथ। एक्चुअली लाहौर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई है मुझे,
क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, डेट्स वाई। लेकिन मेरी रेजिडेंस है वो गुजरांवाला में ही आती है, तो डेट्स वाई मैं गुजरांवाला टीम में पहले था, बाद में मुझे लाहौर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। एक तो ये बात। उसके बाद गुजरांवाला टीम को में ज्वाइन होते ही मैंने बुक्स वगैरह मैं पहले ही पढ़ रहा था, मेरा इंटरेस्ट तो था इसमें। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्च आया, अप्रैल आया, इसके बाद एक्टिविटीज, गुजरांवाला टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम थी, ये हमदान भी जानते हैं कि ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी जितनी एक्टिविटीज हो रही थी, बुक क्लब्स हो रहे थे, काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो हम भी उसी का पार्ट थे, एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे थे, तो काफ़ी हेल्थी इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा था। और जो भी पूछता क्या कर रहे हो, हमने कहा ये कर रहे हैं, और एंजॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा था। इसके साथ साथ जो बुक्स हम पढ़ते थे उससे मैं कंटेंट भी तैयार कर देता, बुक्स की समरीज रिकॉर्ड हम कर देते, तो वो भी ग्रुप में शेयर करते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए काफ़ी, या मेंबर्स के लिए काफ़ी एक मोटिवेट करने का एक एलिमेंट था कि हाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद आई थिंक सितंबर अक्टूबर आते ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई लाहौर की, साइबर पीटर लाहौर। लेकिन टू आवर बैड लक दोबारा फिर एक न्यू लेयर आई इसकी, कोविड-19 की। तो फिर हमने सोचा इंस्टीट्यूट ओपन होंगे, हमने प्लान भी किया, इवन कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में विजिट किया वहाँ की टीम से मिलने के लिए। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से हमदान के छोटे भाई थे, वो भी आए मिलने के लिए। वहाँ मैडम है हमदान मैम का क्या नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से जो मिस तस्लीमा असलम रांझा। मिस, वुड यू प्लीज रिपीट दैट? तहमीना असलम रांझा जी, मिस तहमीना, उनसे मुलाकात हुई, हमने चीज़ें डिसाइड की, लेकिन हम उसे फिजिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वो तो सबके सामने है रीज़न। लेकिन वो जो एक्सपोजर हमें मिल रहा था, दैट वाज रियली एक्साइटिंग। हमने जिस यूनिवर्सिटी की टीम भी बनाई, और इलामा इकबाल की बहुत एक्टिव टीम थी, क्योंकि हमदान के छोटे भाई भी उनके साथ एक्टिव हैं, अटैच हैं, भी एक्टिविटीज हो रही है वहाँ भी। तो डेट्स इट। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में ही हमारे यहाँ कामों की में पब्लिक लाइब्रेरी की इनॉग्रेशन हुई, वहाँ भी हमने वॉलंटियर किया, उनकी बुक सिलेक्शन में, बुक की लिस्ट बनाने में, कौन कौन सी बुक्स आनी चाहिए कलेक्शन में। इसके अलावा लाइब्रेरी की कंपेन में, सोशल मीडिया कंपेन थी वो, चाहे फिजिकल कंपेन थी, हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया। इन अ नटशेल इस सारी जर्नी ने हमें ना सिर्फ एक्सपोजर दिया, बल्कि रीडिंग की तरफ आपको, अकेले आप होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, लेकिन जब आपको डेडलाइंस मिलती हैं, बुक क्लब्स होते हैं कि इस डेडलाइन तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, एक हेल्थी कंपटीशन होते हैं, वो इन्वायरमेंट ऑफ कोर्स आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ही दे सकती है। एज ए इंडिविजुअल रीडर भी आप कर तो रहोगे, लेकिन वो एक एक कह लें सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको तब आती है जब किसी के साथ होती है। तो ये थी, बाकी फर्दर हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और भी क्या क्या इवेंट्स हुए, हमने एंजॉय किया। अक्सर हमदान के साथ मिस मोमिना होती थी, हम न्यू जो साइबर सॉरी एलआर्स होते थे, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, उनकी असेसमेंट करते थे कि हमें ज़्यादा सूटेबल कौन सा एलआर हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, एज अ वॉलंटियर काम कर सके। फिर हमने कंटेंट राइटर्स की लिस्टिंग तैयार की, उसमें से कौन से ज़्यादा कैपेबल हैं, कौन से ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक हैं वॉलंटियर करने के लिए रीड पाकिस्तान के लिए। तो इट वाज आफ्टर ऑल इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें एक्सपोजर भी दिया, और उम्मीद है आगे भी हम इसके साथ अटैच रहेंगे, और वी विल कीप लर्निंग। Of course, मोहसिन। एक तो मोहसिन का बोलने का स्टाइल इतना मजे का है ना, वैसे ही बंदा कहता है अच्छा जरा और थोड़ा सा ज्यादा बोल कुछ नहीं होता। लेकिन यू आर सो राइट मोहसिन, एंड यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग इज, मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप लोग तो अपना वो एक्सपीरियंस बताते हो जो जर्नी के अंदर, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने लर्न किया, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा लर्निंग आप लोगों के साथ रह के मैंने की। Even I think Dal sahab would completely agree with me. उन्होंने कितना learn किया. We have learned so much. You're so right about this. कि ठीक है सोचा जरूर था, पर इस तरह से इतना अच्छा, इतना effective ऐसा कभी भी नहीं सोचा था. We never thought of it that it would work so good. And हाँ उम्मीद तो होती है बंदे को, बंदा कहता है हाँ यार अच्छी चीज कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ की सपोर्ट भी है, लोग भी आएंगे, अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, लेकिन people like you have actually made the difference by stepping into it. So you know this is definitely wonderful. Noor,
अब मेरे ख्याल में नूर अगर आप आएंगी ना तो फिर मैं एंकर पर्सन आ जाएगी तो मैं आई शुड बी गोइंग देन, है ना। अपनी जर्नी का बताओ नूर, कैसी हो, हाउ आर यू टुडे? आज की होस्टिंग नहीं Journey करनी was तुमने? नहीं, it's you're doing great. आप मेरे से बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, बल्कि मैं देख रही थी शुरू में कुछ होस्टिंग जो थी, और मैं देख रही थी कि मैंने कितना कुछ चीजें हैं जो गलत की हैं, और होस्टिंग मैम फातिमा जैसे कर रही है इस तरीके से करनी चाहिए। तो बाकी रीड पाकिस्तान जर्नी वाज लाइक अमेजिंग, प्रीटी वंडरफुल। सारा कुछ काफी स्मूथली चलता रहा, सब कुछ काफी अच्छा रहा। जब मैंने ज्वाइन किया है रीड पाकिस्तान को तो वो एज अ होस्ट किया था, ऑडिशंस हो रहे थे होस्ट के, और आई रिमेम्बर मैं नेशनल लाइब्रेरी में गई थी, वन ऑफ माय क्लासमेट्स टोल्ड मी, और उधर मैं यूजुअली मुझे नहीं इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट होता, लेकिन वो गोल और जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है वो सारा कुछ इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, तो आई थॉट दैट आई शुड गिव इट अ गो। और फिर रीडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए जो होस्टिंग करनी थी उसके लिए आई गॉट सिलेक्टेड, और बस वो वहाँ पे होस्टिंग की, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग उस वक्त, आई रिमेम्बर हिरा शफक थी प्रेसिडेंट, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी हेल्प की, और भी बहुत ज़्यादा जो हमारे साथ को होस्ट थे उनके साथ भी काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही, काफ़ी अच्छी बातचीत रही। और फिर बुक क्लब्स पे बात आ गई। अपनी यूनिवर्सिटी में मैं बुक क्लब कोऑर्डिनेटर जब बनी हूँ तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम था, क्योंकि आई लव टू रीड बुक्स और उसके बारे में बात करना। और मैं स्टार्ट से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही कुछ इस तरह का अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी कि कोई सर्कल हमें बनाना चाहिए, कोई क्लब हम लोगों को रखना चाहिए जिसपे हम मतलब प्रिपरेशन कर सकें, कुछ स्टडी क्लब्स होने चाहिए जिसमें हम जो कोर्स कंटेंट होता है उससे हट के कोई चीज़ जो हमें इंटरेस्टिंग लगे उसके बारे में हम लोग नॉलेज एक्सचेंज करें, शेयर करें, कुछ बुक्स पढ़ें। तो जब वो बुक क्लब का एक इंट्रोडक्शन मुझे दिया गया तो वो मेरे साथ बहुत जल्दी ही स्ट्राइक किया, और बस फिर बुक क्लब्स हमारे काफ़ी सक्सेसफुल रहे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में। काफ़ी उसमें मज़ा भी आता था, नए लोग आते थे, वो इंस्पायर होते थे, पूछते थे हमें किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो उसके लिए इतनी इनफ शायद मैं खुद भी ट्रेन नहीं थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीनियर फेलोज और सबके साथ मिलके हम जूनियर्स को इंस्पायर करते थे, खुद भी साथ साथ इंस्पायर करते थे। तो वही साथ साथ लर्निंग भी हो रही थी हमारी, और जो साथ साथ लर्निंग हम गेन कर रहे थे वही साथ साथ ट्रांसफर कर रहे थे। वो एक उसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वी जस्ट गेन्ड अ लॉट फ्रॉम इट। तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी डिवोशन, थोड़ी सी मोटिवेशन थी जो हमें देनी थी, और उसके रिटर्न में इतना कुछ मिल रहा था कि आई थिंक वो चीज़ विदाउट रीड पाकिस्तान शायद पॉसिबल ना होती। अगर हम अपने ओन पे कोई स्टडी सर्कल, कोई बुक क्लब कुछ इस तरीके से अरेंज करते तो वो ना इतना परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो पाता और ना ही इतना स्मूथली रन कर पाता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम होने की वजह से हम लोगों को वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, और आराम से अरेंज भी हो जाती थी चीज़ें। और फिर साल एक बुक क्लब कोऑर्डिनेटर रहने के बाद आई बिकेम द बुक क्लब हेड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी उस तरफ से कम हो गई कि हर महीने बुक क्लब अरेंज कराना है, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि हर महीने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के बुक क्लब्स को मॉनिटर करना है। तो बट आई थिंक आई लाइक डूइंग दिस, इस वजह से मेरे से मैनेज भी इजीली हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो मैं हमदान को तंग करती हूँ कि हमदान आप कुछ करें, हेल्प करें, हमदान आप देख लें। तो जब एग्जाम्स वगैरह हो तो ये टीम की बहुत अच्छी बात है कि एक बंदा बिजी है तो दूसरा बंदा उसको कभी भी ये नहीं कहेगा कि नो यू कमिटेड टू इट देन यू हैव टू डू इट। वो कह देते हैं कि ओके नो प्रॉब्लम आई विल हैंडल इट, या ओके नो प्रॉब्लम इफ आई एम बिजी आई विल गिव इट टू समबडी एल्स। तो बड़ी इजीली चीजें जब यू गाइज हैव गॉट ईच अदर्स बैक तो चीजें बहुत स्मूथली सारी हैंडल हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। Oh, that's lovely. And Noor, I must say,
that is so actually correct, because teamwork के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता. And you talked about ownership as well. मैं और Ralsa, whenever we sit down and we're actually proposing principles, I'm going to share it with you all, that we make sure कि यार ownership है ना, ownership दो लोगों को, so that they feel that हमने कोई ownership नहीं रखनी है, we don't want it, and frankly speaking है भी नहीं हमारी कोई ownership, it is all yours. You know, we are, yes, we started off with the whole thing, but it would have never gone this far if it wasn't for you people. So it doesn't really, और फिर हम चले जाने वाले लोगों में से हैं यार तुम लोग, you know, you guys have to handle this. Isha, how are you? स्माइल कर रही हो और चुप करके बैठी भी हो. हाँ, बैक. अच्छा, हमदान was saying this कि ये जो है ना बैकबोन है, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा ईशा is the backbone, she never comes on the, you know, she never comes to the controlling seat, she never comes on the forefront, लेकिन ये कि मैं देखती हूँ इतनी silent observer, my goodness. How are you? कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह. जबरदस्त, very nice. ईशा, आई एम गोइंग टू आस्क यू कि एक जो साइलेंट ऑब्जर्वर होता है उसकी जर्नी वैसे कैसी होती है? हम लोग तो आगे फोरफ्रंट पे आके ना, ये नूर तो बड़े जो है ना वो कहती है कि हाँ मुझे लाओ दो, मैं जरा ठीक करती हूँ सारों को ना, तो उसके बाद से सबकी पिटाई लगाती है, यहाँ पे इंटरव्यूज में बुला के, रीटॉक्स में बुला के सबकी पिटाई लगा रही होती है. तो ये जो एक साइलेंट ऑब्जर्वर होता है, बेचारा मासूम सा क्यूट सा जो आराम से बैठा हुआ होता है, चुप करके सबकी बातें सुन रहा होता है, ये मुझे बताना, हाउ डज दैट साइलेंट ऑब्जर्वर फील कि मैं रीड पाकिस्तान के साथ हूँ, कैसा फील करती हूँ? साइलेंट ऑब्जर्वर्स के साथ होता है कि हमारे पास नो का ऑप्शन नहीं होता, हमें हमेशा यस कहना होता है. जो भी हमें पीछे से कमांड मिलती है ये कहती है. ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारा जो ड्रॉबैक कह सकते हैं, या पता नहीं हम लोग इसका फायदा उठाते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता. लेकिन यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सही थोड़ा कम ही फायदा उठाया गया. जैसे कि हमदान कह रहे कि उन्होंने बड़े मुश्किल से मुझे कंट्रोल किया हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन में, और इस तरीके से था कि जब मेरा BSN में एडमिशन हुआ था तो मेरी स्टडीज का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था. मैंने कहा था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट कर दूंगी, तो मैंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट लेट यू गो, विल फाइंड अ सॉल्यूशन. तो मैंने कहा ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो ठीक है. और जो इन्होंने सॉल्यूशन फाइंड किया था वो मैं आप सब लोगों को वाकई बताना चाहूंगी कि इन्होंने खुद डिजाइनिंग सीख किया, और रीड पाकिस्तान के बहुत सारे पोस्टर्स भी इन्होंने खुद बनाए हैं. तो ही इज वन ऑफ माय डिजाइनर. साइबर सुल्तान होने के साथ साथ ये डिजाइनर भी हैं मेरे. माय गुडनेस हमदान, अच्छा ये इस तरह रोका गया था, थैंक यू. बिकॉज़ कितना डेड ऑनेस्ट हमारी साइबर टीम. सारी बातें तो नहीं बताते होते. ईशा वैसे इतने डेड ऑनेस्टी, वे टू गो, सीरियसली, मतलब ये कि बिल्कुल ही पर्दाफाश कर दिया. टीम शी मुझसे किस साइड पर हो जाए टीम वर्क, बस मैं बताने लगी हूँ आज सच सबको. सो वेरी नाइस. बट ईशा, हाउ डिड सारे टाइम के अंदर से हाउ डिड यू, ठीक है, you wanted to move forward, which is, मैं personally इसको समझती हूँ कि it's not a bad thing. Moving forward is just the way of life. But वो जो जितना वक्त गुजारा था और अभी भी, because then there is, you're the only one who would say कि हाँ मैंने छोड़ना है रीड पाकिस्तान को, फिर आगे जाना है, and then you said अच्छा ठीक है भाई हमदान बहुत रो रहा है तो मैं नहीं छोड़ती. So you know, this change of processing in your mind, इसकी वजह से भी बहुत सारी चेंजेस आई होंगी मेंटली, इमोशनली. सो even with these changes, you know you stick around, you sticked around and you're still here with us. So what do you think actually कि फिर भी ये जर्नी कैसी थी? How was it? Honest, I am expecting a very honest answer from you, Isha. I know you're dead honest, अभी slaughter कर देगी सबको. Well, July 2020, when one of my cousins asked me to join Read Pakistan, so he asked me to read each and everything about Read Pakistan ना. तो मैंने सोशल मीडिया भी सारा स्क्रॉल किया, मैंने मैगजीन भी डाउनलोड की, मैंने सब कुछ पढ़ा, और and I was truly inspired by the idea कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सिर्फ एक ही जो है कॉज उसको प्रमोट करे, वो है रीडिंग. उस तरह से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले हैं, हमदान भी उन्हीं में से एक है. इन लोगों से मैंने वाकई बहुत कुछ सीखा है, और यहाँ रहने का अगर कोई पर्पस है ना, तो मेरे खुद के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आई थी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. लाइक
रीड पाकिस्तान ज्वाइन करने से पहले मैंने वाकई एक भी बुक नहीं पढ़ी थी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी भी मेरे बैग में एक बुक होती है हमेशा जो मैंने पढ़नी होती है। इवन क्लिनिकल ड्यूटीज के लिए हम लोग जाते हैं तो मेरे बैग में साइड पे एक बुक होती है जिसको मैंने जैसे ही टाइम मिलता है वो मैंने उसको पढ़ना होता है। जबरदस्त, वेरी नाइस। देखिए कितना ऑनेस्ट ईशा ने आंसर दिया है, बिकॉज 75% ऑफ आवर होल पॉपुलेशन विच इज एक्चुअली जो हमारे रिसर्च है वो ये कहती है कि 75% ऑफ द पीपल दे डोंट रीड एट ऑल। जो 25% है वो अपनी कोर्स बुक्स को प्रेफर करते हैं, and probably 0.0001% of Pakistani community, they actually carry a book or do the reading. So congratulations Isha, you're from that 0.001% जो कुछ और किताबें जो है वो पढ़ रहे हैं। So yeah, it's a good thing. वैसे by the way मुझे एक ये बात बताओ सबसे पहले तुम लोग कि ये हमदान को तुम लोग इतना क्यों वो साइबर सुल्तान बना दिए और इसके ताज पोशी हो गई हुई है, तो इस वजह से तुम लोग ये हमदान को ना जरा थोड़ा सा giving him a bit of वो क्या कहना चाहिए फ्रेश एयर, सारे उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो है ना? करेक्शन प्लीज, अभी ताज पोशी मेरी रहती है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं होने देती, फिर जरा ठहर जाओ तुम हमदान। अभी हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन है चेयरमैन के साथ। Don't worry, he doesn't say anything in front of me. उसकी reasons बहुत evident है। चेयरमैन साहब ने टाइटल देखे, चेयरपर्सन का टाइटल मैं भी ले सकती थी, I did not take it. मोमना, I'm gonna come to you, नहीं तो हमदान मेरे से बहुत सारी बातें निकलवा लेगा। How are you मोमना, कैसी हैं आप? I'm good. Thank you so much for having me, ma'am. I'm very glad that you are here. Unfortunately, Momna और मेरी बहुत ज़्यादा interactions नहीं हुए, but I know for a fact that she is a great person. सारे लोग discuss करते थे मोमना। एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, जरा एक मुझे चीज़ बताएं, what do you think about your team? अपनी टीम के बारे में क्या ख्याल है generally? Sorry, I couldn't catch it. What did you say? I said अपनी टीम के बारे में, what do you think about your team? How good or bad is it? I'm sorry, I think I have bad internet. I really could not catch what you meant. Oh, okay. Now can you hear me properly? Now? Yes, please repeat that. Okay. Momna, I asked, what do you think about your team? As in the teamwork that you guys have. Okay, I get that now. Okay, so talking about my team, I deal mostly with the literary rappers. So I mean, all of them I think are really great people. They're Samvad literary rappers. They're very passionate about what they do. They're very helpful. I just have to text them. And coming to the back-end team, which is our Cyber Sultan and all the people that you're interviewing today, they're all wonderful people. Starting with the Cyber Sultan, because he and I have to deal with the most together. He is always so supportive, so helpful. He's taught me so much, to be honest. He's taught me how to use Canva for starters, which is a lifesaver, honestly. And again, Mohsen, our Cyber Petal Lahore, him, the Cyber Sultan, and I, we conduct some interviews together. And those are always really fun because Mohsen is so, like, I'm always so impressed by his questions. He is really good at psychoanalyzing people. So I'm always really impressed with that. And then Noor, we know she conducts book clubs with such efficiency. Like, we haven't had much interaction, but she works so efficiently that I really admire that about her. And Isha's graphics, she deals with the graphics teams. So that's a really important thing to do as well. And she really is the backbone. Oh, great. So it's like a hats off for everybody, huh? Momna, yes. You know why I asked you this question? Because you are the person who has the most versatile personality. Sara kuch apne andar, you've gotten everything, all colors and shades. And that probably, is that the reason why you've got a butterfly at your back? No, that's actually, so it's a funny thing, but a lot of my creativity and everything is actually familial. Like, there's very creative people in my family, and they're creative in very subtle ways. This butterfly right here was actually made by my Puko, and she gifted it to us as a housewarming gift when we shifted to Pakistan. Oh, so I just really like it. That's why it's wonderful, but it goes with your personality, actually. So I think it has been placed at the right spot. So Shahab, हमारे साथ Shahab कहाँ पर है वैसे, by the way? Do we have him with us or no? Hamdan, anybody?
आई थिंक नूर उनका कनेक्शन इशू है। कनेक्शन इशू है। और दरिया के साथ Okay. क्या? I'm sorry. So could he join actually, or he hasn't joined us? Because I think I can see him here though. He's here now. But he's sleeping. He's sleeping on the job. I'm going to record this. This is going to go live first and then be recorded. And Shahab, you're going to get nailed for it. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, okay. So everybody, so this is amazing that you guys had a really wonderful journey with Read Pakistan. Each one of you is really a person कि जिसके साथ interact किया जाए, and you know we really feel glad and we're really thankful to all of you that you have made such a great mark. So अब एक दूसरी चीज की तरफ आते हैं, जरा difficult चीज. आपस में interact करने के अंदर what I feel personally is that तुम लोगों को कोई difficulty नहीं होती, and you people, you know, feel really indebted to each other, which is wonderful. Teamwork करते रहे हो सारा वक्त एक दूसरे की, you've proven to be a back to each other, which is again a very wonderful team. That's basically the basic thumb rule के जिसके through चीजें work out करती हैं. Problems कहाँ पर आती हैं? Mohsin, I'm going to start with you. प्रॉब्लम किस डोमेन में इसे स्पेसिफाई कीजिए. Okay. So when it was with Read Pakistan, okay, you said while you were, you know, talking to me, you said everything was good and I learned a lot and everything. But what do you think for a person who's just started his journey? Problem तो आती होगी? नहीं आती? कोई भी नहीं आई? सही बताना है. देखिए, जैसे हमारे आज के गेस्ट में से भी मिस आयशा ने शायद बताया कि रीड पाकिस्तान में आने से पहले उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी. यहाँ आके उन्होंने स्टार्ट किया रीडिंग. इसी तरह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम रीडिंग करनी होती है. उनको इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया होता है कि कितना जरूरी है बुक्स पढ़ना और इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं. अच्छा, वो एंटर तो हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी हैबिट नहीं होती बुक्स पढ़ने की, वो आहिस्ता आहिस्ता सुनते हैं, बुक क्लब्स को सुनेंगे, साथ देखेंगे लोगों को. फिर अगर उनके साथ कोई अच्छा क्लासमेट नहीं होता उनको मोटिवेट करने के लिए, पर्सनली उनके साथ अटैच नहीं होता, फ्रैंक, हम अगर मैनेजमेंट में हम तो जरा उनके साथ थोड़े से फॉर्मल रहते हैं कि ऐसा कर लें, लेकिन अगर उनके साथ कोई ऐसा फ्रैंक फ्रेंड नहीं है या उनका कोई क्लासमेट नहीं है जो उनको मोटिवेट करे, यार ये बुक पढ़ के देखो, एक ये नई बुक आई है या ये बुक बहुत अच्छी है, ये आई ऑल्सो हैव रेड इट, तो अगर वो नहीं है उसके पास तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रुप में मैसेजेस नहीं देखेगा. दूसरी चीज, अगर द पर्सन हैज जॉइंड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फिर क्या होता है वो बर्न आउट होना शुरू हो जाता है कि यार कहाँ टाइम दूं. तो मैंने ये भी सोसाइटी ज्वाइन कर रखी है, मैंने ये भी रखी है, तो एक ये भी प्रॉब्लम आता है हमें. इसके साथ एक होता है कि लोग कुछ कभी ये भी सोचते हैं कि अच्छा हम यहाँ आए हैं तो हमें कोई मोनेटरीली भी बेनिफिट होगा, कुछ ऐसा होगा अगर हम एज अ कंटेंट राइटर आए हैं, कुछ एज अ वॉलंटियर कर रहे हैं, तो हम करें ना करें हमारी मर्जी है, हम डिसिप्लिन फॉलो ना करें तो हम पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए. लेकिन किसी भी सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है. तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन जो कमिटेड होते हैं वो लोग तो करते हैं. तो लेकिन इंटरेस्ट की बात है, तो ये प्रॉब्लम होती है. हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है. बट आई थिंक यस, कोविड की वजह से भी थोड़ा सा इश्यूज जो है वो रेज हुए. अदरवाइज जब सेमिनार्स होते हैं या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या एक्टिव होते हैं या रिव्यूज होते हैं, बुक रिव्यूज होते हैं, या इवन बुक क्लब जो है वो एक्टिवली मूव फॉरवर्ड कर रहा होता है, तो चीजें डिफरेंट रहती हैं एज कम्पेयर टू अदरवाइज अगर आप उसको जो है वो देखें. तो लास्ट ईयर से हमें ये प्रॉब्लम आया कि लोग कहते हैं यहाँ तो आपकी बस ऑनलाइन ही वर्किंग चल रही है, आप चिट चैट हो रही है, ये हो रही है, कुछ प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा. हाँ, प्रैक्टिकली उनको कहा करो कि जब प्रैक्टिकली जरा बुक रिव्यू करके आना, जरा एक हफ्ते के बाद मैं तुमसे फला बुक का रिव्यू लेता हूँ. तो फिर ये नहीं, बट यू आर राइट, ये जो है वो प्रैक्टिकली भी चिट चैट वाले, असल में सी द पॉइंट इज के चिट चैट वाले भी चीजें होती हैं, बिकॉज बुक रीडिंग अगर किसी को कहें तो बहुत ड्राई हो जाता है. इफ यू कीप टेलिंग पीपल कि प्लीज बुक रीडिंग करें, ये है रिसर्च ये कहती है, गैलप एंड गिलानी की रिसर्च ये कह रही है, फलां चीज जो है वो ये कह, तो इफ यू कीप टेलिंग देम रिसर्चेस, इफ यू कीप टेलिंग देम कि जी आप बुक रिव्यूज ही लिखें, या अच्छा ये आपने बेकन को पढ़ा है या आपने शेक्सपियर के बारे में आपका क्या ख्याल है, इट बिकम्स रियली ड्राई. नूर, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. तुम्हारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी, और एंकरिंग भी कर रही होती हो, यू आर अ
host, you're a very good host. So what do you feel international जो community है उसका पाकिस्तान से comparison में, do you ever feel कि the Pakistani community is lagging somewhere behind? Yes, absolutely. I believe so, because in Pakistan, there's like a lot of people are not reading the books. A lot of people are not focusing on their degrees the way they should focus. I think that majorly they are after the grades, that they have to secure good grades and they have to get the degree. But when I'm interacting with foreign graduates, they are basically focused on learning the skills that are going to help them in the real world. They're not, they also are concerned about grades. I mean, every student is concerned about grades, but for them, grades are something secondary to skills. But for Pakistanis, grades are a primary goal, and skills comes after that. So I think skills should matter more. We can guess it from the fact that once they have been taught everything online, and then after that they are asked to give physical papers, nobody is ready for that. Why is nobody ready for that? We are not going to admit it, but we all know why nobody is ready for it, because they are not prepared. They have not prepared themselves that well. They don't feel confident that they're going to give a good exam. So how they are confident that they would perform well in the field? So that is some difference between I think, and the other factor is that in Pakistan, students and youngsters, I'm not talking about anybody else other than students right now. So in Pakistan, I believe that they are able to somehow sort of exploit or manipulate the system as well by protesting. And I'm going a little bit political here, but not too much. I'm trying to keep it a little less political, but the facts are facts, and that doesn't happen anywhere else in the world. It doesn't go like that. So these are the few things that that are some drawbacks of the mindset of students. And there is a lot of things that have to be done about the teachers and other education related stuff. But as I already mentioned, that I'm talking about students here right now. Yes. So the major difference comes, I think, from the mindset, and our mindset is somewhat very different from the mindset of those developed countries. So I think that's where we find the differences. Yes, I think yes. This is a very good answer that you've just given. हम लोग के खुद भी feeling है कि हम लोग returning back to society बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, or maybe we don't find it good enough that we want to invest in that, and we don't want to invest in ourselves either. So it becomes very difficult to make people understand that reading is really important to you, and also because yes, we find that embed किया जाता है that आपने ये पढ़ना है क्योंकि ये ज़्यादा earning देगा आपको at the end of the day, which is very unlikely, because for the rest of the world आपको अपनी grooming इसलिए नहीं करनी होती because you have to earn good. आपको अपनी grooming इसलिए करनी होती because that's the kind of investment that you want from life, from your from your being, for you being a human and a good human. So it's returning back to community from which you have taken up so much. Shahab, इससे पहले कि आप भाग जाएं, I think I will have to invite you to say a few words. Hello, Shahab. आप ठीक हैं? Hello, assalamu alaikum. Actually, where were you? I was here. मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था. मैंने हमदाद से पहले भी बात की थी, लेकिन इंटरनेट का मसला था, and I was keenly listening to everyone's expressions and their observation and their experience, and it was giving me a real joy. And I was like, whenever the name of Read Pakistan comes, so my heart, my mind, it is full of ideas, words, and experiences to talk about that even I forget what to start with. But I'll address the first question, as you asked about the journey and the experience with Read Pakistan, how it started. I am a graduate now, and I started my journey when I was in second semester. When I started my second semester, I joined Read Pakistan. We were only 10 people.
We had no name for CyberRead. It was called the social media team at that time. And that's how we started. I started as the city leader for Peshawar. We had a Peshawar team meeting. Only 2 meetings had been held that time. One was held in Peshawar, one was held in Islamabad. And that was the time when I interacted with Sir Farooq and how he had a vision. वो उनका vision क्या था, वो रीडिंग के बारे में बात क्यों कर रहे थे. अभी बात कर रहे थे मोहसिन प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में कि हम जब रीडिंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं. बट आई बिलीव दैट रीडिंग इज समथिंग वेरी रिफॉर्मेटिव. रीडिंग जो होती है वो आपकी रिफॉर्म्स लाती है, और हमें ये आइडिया है कि रिफॉर्म्स आपके ट्रांसलेट 2-3 साल में नहीं होते. इट टेक्स डेकेड्स टू ट्रांसफॉर्म. एंड जो रीड पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है रीडिंग को लाने का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है. ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि रीड पाकिस्तान अगर रीडिंग की बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है. द बेसिक पर्पस इज दैट हम देखते हैं मुख्तलिफ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम वॉर इकोनॉमी से निकल आ चुके हैं. नाउ इज द टाइम फॉर नॉलेज इकोनॉमीज. इकोनॉमीज अगर पावरफुल हैं, सुपर पावर हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट पावर. लेकिन सैडली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक वो ट्रेंड, बल्कि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हम देखें तो उसमें ये ट्रेंड आया नहीं है. हमने नॉलेज इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का सफर का आगाज किया नहीं है. और रीड पाकिस्तान का इस काम में आना एक पायनियर के तौर पर इट्स वेरी अप्रिशिएबल. और द गुड थिंग अबाउट रीड पाकिस्तान इज कि ये सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है. अगर हम अपने विजन की बात करें रीड पाकिस्तान की, सो वी हैव रीड पाकिस्तान, रीड अफ्रीका का चैप्टर है. हम इसके अलावा रीड उम्मा पे काम कर रहे हैं. हमने रीड टर्की पे आगाज लिया था. तो इट्स अ ग्लोबल मूवमेंट एंड I actually am having goosebumps right now by having such amazing individuals who are putting their energies, their sweat, their blood, not blood actually, let's not talk about that. But yeah, they are putting their energies there. And वो जब आपके लिए ट्रांसलेट होती हैं मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल हमारे रीड टॉक्स का सिलसिला चला और लोगों ने बात की मुख्तलिफ मौजू पर, तो दैट वाज समथिंग दैट गेव मी प्लेजर. बिकॉज 3-4 साल पहले जो हमने रीड पाकिस्तान की साइबर रीड की जर्नी का आगाज किया था, वो अभी हमारे वो इफेक्ट्स को ला रहा है. और मैं आज के जितने आजकल मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, हमदान को पता है. I'm working as on an honorary position, so I'm not in contact with the new leaders. Lekin the work they are doing, it always gives me pleasure. And the only thing that I would like to tell them is that they should keep putting those energies. 1 साल पहले, 2 साल पहले many of our members जिन्होंने start किया था जो pioneer से, वो छोड़ के चले गए थे because they didn't see that result coming. But we stayed, some of other members also stayed, and now when the efforts are translating, it is giving a real pleasure. इसके अलावा एक बहुत खुशी मुझे इस बात की हो रही है. I'm sorry I'm taking so much time and I am speaking randomly, but as I said that there are so many emotions, feelings and thoughts attached to this very concept of Read Pakistan, not only the organization but this cause and concept. So one thing that when we talk, when I had worked on different positions, from cyber predator, head for live talks, head for book club, cyber sultan, prime minister and whatnot. But the main thing that I would like to emphasize here is on that रीड पाकिस्तान का जो मकसद था वो 2 चीजों पर था. एक तो ये था कि रीड पाकिस्तान बुक्स का जो लव है, बुक्स के लिए जो प्यार है, उसको रिवाइव करे. और दूसरा जो मेन मकसद था जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो थे कि 50 ऐसे लीडर्स बनाना जो कि ना सिर्फ सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सके बल्कि रीड पाकिस्तान को आगे ले जा सके. जैसे आपने कहा कि हम तो जाने वाले हैं, खैर आप जाने वाले हैं नहीं, लेकिन इट्स सो गुड टू सी के यंग लीडर्स, हमदान, मोमिना, मोहसिन, नूर, ईशा और हमारे साथ इस तरह के बहुत से ऐसे लीडर्स हैं हु आर पोटेंशियली केपेबल कि वो रीड पाकिस्तान को आगे ले जा सके. तो उस मकसद का पूरा होना, कहते हैं ना कि आप जब कोई विजन रखते हैं, आप किसी मकसद के लिए काम रखते हैं और कोई गोल रखते हैं,
जब वो पूरा होता है सो उससे बढ़कर कोई सेटिस्फेक्शन और कोई खुशी नहीं होती. And personally I had this thing in my mind, and when I see it translating, it gives me a real pleasure. So yeah, that was, I have a lot to say, so I would just Bravo, stop it bravo. here. Itni lambi tak come on. No, Shahab, no, on a serious note, very good. Where were you and all this energy? Sare to itna aaram se, bahut achhi tarah se jo hai wo baat kar rahe the, and everybody was being so nice and respectful. So I needed this, to come out from somebody. Ke haan, I'm going to open the doors for all of this new Vesta. But very rightly said, knowledge economy pe humne bahut sari baat ki. Abhi recently I had a talk. I was at at a German organization. It was so they actually invited me, and I was there to introduce Read Pakistan. At the end of the whole session, I ended up talking about knowledge economy, because wahan par bhi wahi baat thi. Most of the people were saying कि यार इसमें से तो financial benefit, book पढ़ लें तो फिर हम तो इसलिए focus करते हैं books के ऊपर, because they're from the course, because हमने अच्छे marks लेने हैं in our various semesters, and then we have to reach to those goals which are financially the ones which are really important. So I had to explain to them a lot of knowledge economy, jo ki basically I'll to my viewers as well, knowledge economy ka basic I'll put it in I'll put the crux in front of you. नॉलेज इकोनॉमी का सारा मकसद ये होता है दैट आप अपने आप को इस कदर पॉलिश कर लेते हैं, यू बिकम सच an irreplaceable part of the economy that then the money starts revolving around you. So you don't run after the money keeps running after you, which is also an Islamic concept. कि हम लोग कहते हैं कि मौत और जो आपकी रिस्क है, it comes after you. You don't have to run after it. So basically, yes, अब ये जो है वो क्योंकि only because the West has started talking about it, it becomes more logical for most of the people. And well, it's unfortunate, a dilemma of our society, but जो लोग समझ जाए इसको, I think that's going to be the superb thing, because so we in all Vestas we don't talk about knowledge economy. We do tell people how to become a vivid, more ferocious, more versatile reader, but at the end of the day you understand that it's all going to get into your benefit. So this is going to be, I had so much to ask. Remember Hamdan, when I was talking about this to you, I was saying acha hum 5 topics pe baat kar lenge, and then I said it myself, how genius of me that I said mujhe lagta hai 2-3 se zyada pe baat nahi ho sakegi. You remember that, me saying that to you? और वही हुआ है ना. Look at the time. एक और सेशन रख लेते हैं यार तुम लोगों के साथ, अच्छी सी टीम है. देखो ना, Momna is, I'm going to call Momna a butterfly now from now onwards. And Noor को तो मुझे पता है, she's the host, और Mohsin the genius. हमदान तुम वैसे साइबर सुल्तान हो, तो मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं कह सकती. Stick with your title. शहाब, तुम्हें क्या कहना चाहिए मुझे? गायब में से जो एकदम से आगे, the energetic one, and Isha, the silent observer. I'm gonna name each one of you actually. बस ठीक है, मैं ऐसे ही सबको याद रखूंगी. अब मुझे तुम लोग कैसे नाम भी याद रहे ना, so this is how I'm going to call you on. So Shahab is the energizer, वो cell वाला नहीं, वो जो हम देखते हैं ना, those batteries that you keep buying, the good one. और Isha, the silent observer, Momin the butterfly, Noor the host. मेरे से बेहतर हो Noor वैसे. अच्छा, you were saying कि Junaid, I'm not that good, you were better than me. और Mohsin the genius, और हमदान तुम्हें मैं कोई नाम नहीं, you already have a name, so it's not important. लेकिन मैं ये नाम अब दोबारा डेजिग्नेशन चेंज नहीं करने वाला प्रेजेंटेशन में. But I didn't want just see. Okay, so the story behind that, I'm going to tell it in 5 seconds. The story behind that is I'm supposed to be मैं और Dal Sahab are supposed to be the founder members, ठीक है? And I'm saying it live, so there is no doubt about this. But unfortunately, उन्होंने मुझे कहा आप chairperson बन जाए. मैंने कहा जी मैं इतनी एक्टिव नहीं रह सकती, आप chairman बन जाए. So हम बड़े humbly एक दूसरे को वो toss around करते रहे designation. And so my story with Read Pakistan now. So so what happened was कि Dal Sahab ने कहा ठीक है I'll be the chairman. मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे कोई senior vice chairperson दे दें आप title. Obviously I'm the board member. Obviously हम दोनों ने मिलकर 8 साल पहले इस पूरी organization को, जो कि उस वक्त organization नहीं थी, trust me, it was just me and Dal Sahab.
So we wanted to take it, from the rags to whatever. So this is from where we started, and then chalte rahe. I was at the back end. सिर्फ मैं front पे नहीं आती थी. Just like Isha, I wanted to stay at the back. And मैं आना शुरू हुई हूँ Read Talks के साथ front पे. And obviously I wasn't very confident about my Urdu either. So it gave me quite embarrassment. But anyhow, so this was, this was what was going on. Unfortunately, wherever I went, to the seminars, in the conferences, kisi inauguration ke upar, everybody would just मेरी डेजिग्नेशन ही गलत बोलते थे. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा ठीक है, सीनियर वाइस, और तो और वाइस चेयरमैन तक का मुझे कह दिया, टाइटल दे दिया. मैंने कहा मैन, रियली? आई मीन शी इज अ मैन इनसाइड दिस सेट. ओके, चलो सही. सो एवरीथिंग वाज, सो आखिर में तंग आकर 8 साल के बाद डाल साहब ने कहा बस बहुत हो गई मैडम, प्लीज कुछ और रख लो नाम, लेकिन सीनियर वाइस चेयरमैन ना बनो एटलीस्ट. मैंने कहा ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली माय स्टोरी. इसके साथ और भी बहुत कुछ है, which someday we will talk about. जब नूर मेरा इंटरव्यू करेगी, and then I will be all happy and nice. I'll be like, oh thank you Noor, you invited me for this interview and everything. Oh, that would be a lovely idea. I'd love to do that. Yeah, so you guys should get my story actually. उसके अंदर बहुत ही टर्मोइल है, सर के दर्द बड़े थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी सर के दर्द चल रहे हैं. And sometimes I really feel कि बस मैं resign करने लगी हूँ, but I can't resign. I'm a member for lifetime. So that's the story. So by the way, thank you so very much everyone. It's 8:15. I'm going to keep another session. Hamdan, you mark it on your calendar that we are going to have another session. अब कल तो नहीं रख सकती मैं, नहीं तो मैं रख लेती, क्योंकि अभी मेरे 3 क्वेश्चंस रहते हैं. यू रिमेम्बर, मैंने पूछने हैं तुम लोगों से, पूछ के रहूंगी. बिल्कुल, जब आप कहें हम सेशन रख लेंगे, अगर ये मेंबर्स इजाजत दें, क्योंकि बहुत बिजी हैं, बड़ी मुश्किल से इन्हें इकट्ठा करना पड़ता है. बहुत मुश्किल काम है. तुम और मोहसिन एक दफा आ जाना, नूर और मोमना एक दफा आ जाए, ईशा और शहाब एक दफा आ जाए. व्हाट डू यू से टू दैट? अच्छा आइडिया. हाँ, देखा, बैठे बैठे आइडियाज आ रहे हैं तुम लोगों के. इतने जीनियस हो तुम लोग, मुझे भी जीनियस बना दिया अपने साथ रख के. है ना? जबरदस्त. So everybody, thank you so very much for your time. I am really grateful. और ये वैसे मैं हर एक को कहती हूँ मैं बड़ी grateful हूँ, ये वो होती भी हूँ genuinely, लेकिन ये कि वो तुम लोगों की इसलिए ग्रेटफुल, तुम लोग वैसे भी तो पूरा साल हेल्प करते रहते हो ना चीजों में. तुम्हारे हमदान 9 महीने हुए हैं सिर्फ, अच्छा 3 महीने का एक्स्ट्रा मैंने थैंकफुल तुम्हें बोला. 10, 11, 12, yes. 3 महीने एक्स्ट्रा बोला है तुम्हें तो. बट नो एवरीबडी, पीपल हु हैव बीन वाचिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. साइबी रीड के बारे में सबने हो सकता है सुना हो, जिन्होंने नहीं सुना. रीड पाकिस्तान की बैकबोन अगर कुछ है तो साइबी रीड, और साइबी रीड की बैकबोन ईशा. आज से टैग कर देना हमने ईशा द बटरफ्लाई को. मोमिना थी हमारे साथ, मोहसिन थे, ईशा थी, इसके अलावा हमारे साथ नूर थी जिनको आप लोग देखते रहते हैं, होस्टिंग बहुत अच्छी करती हैं. हमदान थे, and of course हमारे spokesperson शहाब थे. And I'm really glad, thank you very much everybody. I would have again given the whole introduction, but वो थोड़ा ज्यादा हो जाता, तो जिन लोगों ने introduction अभी नहीं सुना, वो शुरू में you can go back, scroll back and listen to the intro of all these wonderful people. I would just say one thing, सब डिफरेंट जॉनर्स के लोग हैं, हर एक का डिफरेंट इंटरेस्ट है. सब लोग डिफरेंट जगह से आए हैं, बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, एजुकेशन सेटअप्स डिफरेंट है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दीज पीपल आर दे वर्किंग टुगेदर. They have never given a chance to anybody to speak about them. They have worked like one soul, one body. And the best thing about them is that they're all individually अलग सब जबरदस्त किस्म के लोग हैं. So if you want to get to know them better, हमदान एक काम करो, 2 मिनट का सबका वीडियो अच्छा सा बनवा के तो अपलोड करो. I want that people should know more about Mohsin, more about you. चलो अपना ना करना, more about Noor. चलो Noor, Momina, definitely, or Isha, Shahab. So I'm really glad. Or as far as my emotions are concerned, I'm actually overwhelmed. I'm really, really thankful to all of you. Just I just can't express in words how important you all are to Read Pakistan and to me.
personally, because one day when I'll share my journey with you, you will know kis tarah se yahan se yun gayi thi flight. So we'll talk about that one day. Thank you very much everybody for being here, and I'm going to see you पे around. अल्फाज खत्म हो गया तो शेयर सेंड करना चाहिए हमें. Oh yes. Oh my god. अच्छा ठीक है, okay fine. Go ahead. देखें, अब तो ये हर बुक क्लब का हमारा रिचुअल बन चुका है, रीड पाकिस्तान. Exactly. ये तुमने बनाया रिचुअल हमदान. Oh my god. ठीक है, अब कर लो, अब शेर सुनाओ, सब सुन लें प्लीज. थैंक यू. मुझे भी बता दीजिएगा बाद. मैं आपको ट्रांसलेट करके सेंड कर दूंगा बाद. Oh my god. अच्छा करो भाई, शेर से इख्तिताम कर लो. जरूर. सितारे आसमानों पर चमकते हैं, दमकते हैं, हमारे संग चलते हैं, हमारे संग उड़ते हैं. अगर बस ये कहा जाए सितारे बस फलक पर हैं, मेरी सलीम इस बात को हरगिज ना मानेगी. मुझे हर बार रोकेगी, यही हर बाल बोलेगी. सितारे लोग होते हैं जो तेरे संग चलते हैं. क्या बात है. एंड हो गया. एंड हो गया. क्या बात है. बहुत अच्छे. अब ट्रांसलेशन करके भेजने के बाद मैम उधर बिल्कुल स्टक हो गई है. आई गेस इट्स इंटरनेट कनेक्शन, लो बैंड है. अच्छा, शहाब ने जब अपनी बात कही, अपनी स्टोरी सुनाई, तो मेरा दिल किया कि कुछ वर्सेस, कपल ऑफ वर्सेस उन्हें डेडिकेट करूं, क्योंकि हमारी ये जर्नी थी आज की रीड पाकिस्तान के साथ, वो शेयर कर रहे थे. तो शहाब अगर आप सुन रहे हैं या सुनेंगे तो वो कुछ यूं है. हम सुनाएं तो कहानी और है, यार लोगों की जुबानी और है, नामा बर को कुछ भी हम पैगाम, दास्तां उसने सुनानी और है, जो कहा मजमून हमने वो और था, तर्जमा की तर्जमानी और है. थैंक यू. क्या बात है मोहसिन. वाह वाह. That's all for today. इजाजत है. नहीं ईशा, कोई शेर आ रहा है जहन में? नहीं, बिल्कुल नहीं. मोमना. I'm sadly not the Urdu poetry type. My mom is, but not me. नहीं, don't worry, I'm not either. ये मुझे ट्रांसलेशन अभी हमदान सारे उसकी भेजेगा. वैसे probably I got disconnected in the middle, something happened, network issue, but it's fine. नूर कहाँ गई? Have we lost? No, Noor is here. शहाब, अगर it's all about शेर और शायरी तो शहाब, वैसे शहाब चलो ठीक है, ना करो हम पे जुल्म. थैंक यू. आपकी शायरी थोड़ी उदास हो जाएगी. चलो, उदास शायरी करना चाह रहे हो शहाब? सीरियसली? नहीं, मैं कोई शायरी नहीं करना चाह रहा. वो हमदान और मोहसिन ने ऑलरेडी महफिल लूट ली है, तो हमारी जगह नहीं बनती अभी. ठीक है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल जगह नहीं बनती. ठीक है, थैंक यू हमदान, थैंक यू मोहसिन. Thank you everybody. It was wonderful having you guys around. We're going to keep another session. So इसको पहले से ही मैं part 1 और part 2 mark कर दूंगी, load करने से पहले. Thank you so much, ma'am, for being such a wonderful host. It was first time interacting with you, and it was a wholesome pleasure. Thank you so much. Oh no, wonderful to have you guys around. सितारे तुम लोगों बता नहीं दिया हमदान ने शुरू में कि सितारे सारी हैं, तो मैं क्या हूँ? ब्लैक होल मतलब. लगता है आपको भी एक डेडिकेट कर देंगे जाने से पहले. 2 साल क्या चीज? Okay, who said what? मेरा ख्याल है आपको भी जाने से पहले एक शेर सुना, आपको डेडिकेट कर देना चाहिए ताकि आप उदास ना हो. मैं बहुत उदास हो रही हूँ ये सुन के सिर्फ कि हमदान तुम फिर से कुछ शेर सुनाने लगे. अच्छा चलो सुना दो. अच्छा शेर है, अगर आप सुनाए. बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मैं तो रो रही हूँ असल में. बिल्कुल, ये आपके लिए जेन्युइन. अगर किसी और को सुनाया तो माजरत, मैम के लिए था ये. ठीक है, तब से बचा के रखा. एक मिनट, तुमने और भी बहुत सारे लोगों को सुनाया कि माजरत आपको भी पहले सुनाया था, अब मैं आपको भी सुनाने लगा. याद नहीं किस को सुनाया, पर क्या कह सकते. ठीक है, सुना दो, कोई बात नहीं. आई विल एडजस्ट. खुश शक्ल भी है वो शख्स, ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा अजीज थे. नाउ इट्स अप टू यू कि आप
पहली लाइन पे आ रही हैं या दूसरी लाइन पे आ रही हैं? नहीं, I'll take both of them. अच्छा ठीक है, थैंक यू यार हमदान। ये तुम्हारे पीछे 2 शेरों का जो है ना वो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब ये तुमने शेर बोल दिया, चलो ठीक है, कट नहीं करूंगी अब मैं उसको बीच में से। चलें। I won't agitate. Chane, thank you very much everybody. This was an amazing session. I'm really glad, and thank you हमदान, आपने मतलब you know you flatter me. समझ जाओ। You flatter me. All right, okay, Momina, Isha, Noor, Mohsin, Hamdan, you know, everybody, Shahab, thanks a lot, and I'll be catching you around. Hope to see you guys again. Thank you, ma'am. This was really fun. Thank you so much, ma'am. It was wonderful. Thank you very much. Thank you. Adios.